This is your calcium hydroxide, white precipitate. ये हो गया green, dirty green precipitate, that is your ferrous hydroxide. This is your reddish brown precipitate, ferric hydroxide. Hello students, welcome back to Chemistry with Nick. So today we are going to learn analytical chemistry, is action of sodium hydroxide and ammonium hydroxide on solutions of salts. और ये तुम्हारा chapter 4 है ICSE chemistry के. So what we are going to study in this analytical chemistry is about the precipitates, color of the precipitates. But before that, first we have to understand what is the meaning of reagents. So reagents का मतलब क्या होता है? Reagents का मतलब होता है कि a substance or a compound used to test for the presence of another substance. So मतलब कोई भी salt दिया होता है, specimen X दिया होता है. So here we have to take reagent sodium hydroxide or we can take ammonium hydroxide. उस salt का solution में add कर कर जो precipitate form होता है. So from there we have to come to know what type of cations are there, what type of metal ions are present in it. So we call them reagents. So क्यों sodium hydroxide or ammonium hydroxide is used and why not copper hydroxide or ferric hydroxide? Why only we emphasize on these sodium hydroxide and ammonium hydroxide? The reason is, first of all, they are strong alkaline, they are alkaline in nature. Second, they react with metal ions to form insoluble hydroxide. Means जो ये दोनों react होता है कोई भी salt solution के साथ, it forms a precipitate. Insoluble hydroxide का होता है मतलब होता है precipitate. And the another reason is they are less likely to interfere with the results. So मतलब जो product form होता है वो product formation में कोई भी interruption नहीं होता है, कोई नया compound नहीं form होता है, मतलब वो precipitate disturb नहीं होता है. For that reason we take sodium hydroxide and ammonium hydroxide as a reagent here in this analytical chemistry. तो हम लोग को मालूम होना पड़ेगा कि what are these precipitate or how they are related to the ions. ठीक है? तो whenever we see a blue color precipitate, so here we take sodium hydroxide, aqueous ammonia, also known as ammonium hydroxide. Okay, मतलब वो salt solution में sodium hydroxide डाल दोगे, तो if we see blue color precipitate, we always have to directly link it with copper ions. So blue means your copper ions, Cu2+. And whereas in aqueous ammonia or your ammonium hydroxide, it is soluble in nature. So it becomes soluble. जो precipitate है वो dissolve हो जाता है वो solution में. So next, green precipitate. Also in your textbook you will find dirty green precipitate, which I'll show you in the video also more clearly. So dirty green precipitate is always related with the ferrous salt. मतलब कोई भी ferrous salt होता है, FeSO4 ferrous salt हो गया, ठीक है? कोई भी salt मतलब ferrous chloride FeCl2 हो गया. मतलब ये दोनों salt सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो, उसका सोल्यूशन क्या होता है, एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और इन एक्सेस इट बिकम्स इनसॉल्युबल. देन आता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और वो जो रेड प्रेसिपिटेट होता है दैट इज ऑलवेज लिंक्ड विथ फेरिक आयन. सो मतलब वो सॉल्ट जो डर्टी ग्रीन देता है वो होता है फेरस और जो सॉल्ट रेडिश ब्राउन देता है वो होता है फेरिक आयन. मतलब इधर पे प्रूव होता है कि वो सॉल्ट में फेरिक आयन होता है, कैटायन होता है. So whether we put excess sodium hydroxide or ammonium hydroxide, it becomes insoluble in nature. Now here we have freshly prepared this precipitate in the lab. So as you can see, here is white precipitate, here dirty green, reddish brown, we have white precipitate, gelatinous means bit shiny, okay, and we have a blue precipitate, pale blue precipitate. Now how are we going to remember what precipitate is having what type of ions? So for that आप लोग इसका screenshot ले सकते हैं, which will be really helpful when you are doing self study. So here calcium nitrate is reacting with both of this sodium hydroxide and ammonium hydroxide forming calcium hydroxide, which is white precipitate, right? And with excess it is insoluble. So जब white precipitate form होता है, so we always come to know that is calcium hydroxide. और calcium hydroxide में कौन सा cation है? Calcium. So we will learn this reaction rule in more depth. Now here we are going to learn the reactions. एक rule होता है
प्रेसिपिटेट और कैटायंस को याद करने के लिए तो जो लास्ट में वो जो स्क्रीनशॉट करने के लिए बोला था वही वाला है इधर पे. सो हियर फर्स्ट स्टेप वी हैव टेकन कैल्शियम नाइट्रेट. सो कोई भी कैल्शियम सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये होता है व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट. ये याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है. पर ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं होता है. द रीजन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा वीक बेस होता है, इसीलिए वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल हो जाता है, और दे इन एक्सेस क्या होता है कि इनसॉल्युबल बन जाता है. सो कैल्शियम सॉल्ट, कोई भी कैल्शियम सॉल्ट सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. तो रिएक्शन में हमेशा आता है, मतलब कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है, एक तो हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, और जो ये कैल्शियम नाइट्रेट है रिएक्ट होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH. इधर पे लिखते हैं. देन व्हाट डू वी गेट द प्रोडक्ट. ये जो कैल्शियम है इट इज गोइंग टू बॉन्ड विथ OH आयंस. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. कैल्शियम में चार्ज +2 होता है, सो क्रिस क्रॉस मेथड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और आपका बनता है नाइट्रेट के साथ कौन फॉर्म होगा बॉन्ड, सोडियम. सो द सॉल्ट फॉर्म्ड हियर विल बी NaNO3, सोडियम नाइट्रेट. सो वेदर वी टेक कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी कैल्शियम सॉल्ट, we always get calcium hydroxide. So color होता है white precipitate. Now next we have ferrous sulfate. Charge of here iron here is Fe2 plus. So इधर पे है ferrous sulfate. Sulfate भी react होता है both with sodium hydroxide as well as ammonium hydroxide, and it gives ferrous hydroxide. Now this ferrous hydroxide is a dirty green precipitate. Now when we add excess sodium hydroxide or ammonium hydroxide, then it becomes insoluble. So this explanation along with the video with the real life examples I'm going to show you later. So इधर पे देखिए FeSO4 लिया हुआ है, ठीक है, रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सेम फेरस सल्फेट we will take here ammonium hydroxide. Now here Fe is going to form bond with OH, so here we get FeOH. So, इधर पे हाइड्रोक्साइड में होल 3 होता है कि होल 2 होता है, इधर पे होता है 2, क्योंकि इधर पे फेरस लिया हुआ है. चार्ज होता है फेरस का 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड का होता है -1. सो व्हेन वी क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे तो Fe1 और OH2 आता है. सो FeOH होल 2. और कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है, sodium and sulfate. So here we get Na2SO4. Sulfate charge is -2. So crisscross करके sodium sulfate salt बैलेंस नहीं किया है. So here is your ferrous hydroxide. Now similarly with ferrous sulfate same product आता है, इधर पे same precipitate form होता है O2. पर salt कौन सा form होता है, इधर पे अमोनियम है, इधर पे सल्फेट है. So ammonium sulfate. So NH4SO4. Sulfate charge is -2. So we will put bracket here and put 2 here. So ammonium sulfate is formed. The next idhar pe we have taken ferric, charge is 3 plus. So ferric chloride reacts with sodium hydroxide as well as reacts with ammonium hydroxide to form a precipitate. Now that precipitate is iron 3 oxide, और ये होता है reddish brown precipitate. So when we add in excess sodium hydroxide or we add ammonium hydroxide in excess, they become insoluble. मतलब वो precipitate dissolve नहीं होता है, insoluble. Next we have here zinc sulfate. मतलब कोई भी zinc salt sodium hydroxide और ammonium hydroxide के साथ react होकर same precipitate देता है, zinc hydroxide. We always put arrow like this, downward arrow to show precipitate. So zinc hydroxide. So what is the color of this zinc hydroxide? It is white gelatinous PPT precipitate. Okay, and when we add more sodium hydroxide in this precipitate or maybe ammonium hydroxide in this precipitate, then these precipitate dissolves. So ये बनता है soluble. So previous में देखा था those precipitates were insoluble. Now here they become soluble.
Now next we'll take lead salts, कोई भी salt, PbNO3. We can take lead chloride भी लिख सकते हैं. So when we react this with sodium hydroxide or ammonium hydroxide, we get same product, lead hydroxide, and the precipitate becomes chalky white in color. But here is the catch. So with sodium hydroxide, it is soluble, okay? But whereas in excess ammonium hydroxide, it becomes insoluble. So मतलब ammonium hydroxide के साथ वो precipitate dissolve नहीं होता है, but reaction हो रहा है to form chalky white precipitate. Then we have here copper sulfate. Now this copper sulfate also reacts with both to form precipitate. Here copper hydroxide. Now this is pale blue precipitate. Or when we add sodium hydroxide in excess, it becomes insoluble. Okay, sparingly soluble हो सकता है, और ammonium hydroxide के साथ it becomes soluble. So this is your reaction rule for analytical chemistry. So मालूम होना चाहिए कि with what salt does it dissolve, which salt dissolves with excess ammonium hydroxide, ये मालूम होना चाहिए. And for more practical, we are going to look at the video now.